Guys, welcome back to my channel By 2.0 और आज हम वापस मेरा ये जो क्या बोलते हैं हैंड रिटन स्टोरी टेलिंग का जो पहली बुक हम कर रहे थे, हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया था। वो हम चैप्टर 4 पे बढ़ते हैं। तो इस बार चैप्टर 4 पे बढ़ते हैं हम सीधा। मैं देखता हूँ ये ऑन होता है क्या? हाँ, फेस कैम नहीं, कोई ना। चलो, तो हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। और जो भी हुआ है, जो भी हमने पढ़ा है, मैं तो भूल गया, बहुत टाइम पहले थर्ड चैप्टर अपलोड किया था। तो फोर्थ चैप्टर अपन कंटिन्यू करते हैं। कुछ याद है तो मुझे खैर याद है, पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमें पता है होमिली और हैरी मेन कैरेक्टर है, और हमें पता है कि हैरी का एक मैंशन है सीक्रेट, और ये मॉन्स्टर की रिलेटेड बुक है। लेट्स गो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। He was pointing his fingers at me. I heard an enormous noise from the back. Something was coming. Suddenly a shadow covered my mouth. Then something got stabbed in my leg. And the in my belly again. And again. I started to suffocate. I was able to feel the sword running across my throat. Then I held the sword and stabbed it on my head. My head cleared out. I started to attack Harry. Harry fell on the floor. As I was about to stab the sword in his belly, he flew up. His sword flew up too. I opened my eyes and saw that I really got some cuts, and my head was getting heavy. I was not able to feel anything. My mom saw me and called the doctor immediately. My head was getting heavy. Doctor told my mom that they needed to do an लिखना भूल गया, an immediate surgery. My mom agreed. I was given anesthesia. After I woke up, the doctor said he has stopped his most of the bleeding, but still some internal bleeding has not stopped. After a couple of days, we'll do another surgery to stop his bleeding. One more thing, his head has got a swell, but his legs are fine, and his head bleeding has stopped. I was making a throaty face, not because of surgery, but by Harry. I decided that if Harry comes this night, then I'll fight him. I was making a plan. How can I take his sword? How can I fight him? My mom came towards me and said, there is a bad news and a good news. Which one do you want first? Obviously bad. I groaned. Okay, you are paralyzed from your right side of the brain, but you have treatment for 1 month. 1 month! I screamed. I don't want to express my feeling. A month was 2 months. I wish that I can hibernate. ठीक है, पहला पैराग्राफ बताता हूँ। तो दिस थिंग इन हॉस्पिटल, ये लास्ट चैप्टर में शायद डोमिनिक को कोई हाँ, वो मैंशन उसके सर पे गिर गया था वो, तब उसका सीन चल रहा है। तो अब यहाँ पहले पैराग्राफ, भाई मैं ना बहुत बहुत हार्टफुली अपोलोजाइज करता हूँ आप सबसे। इस टाइम मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत खराब थी, तो इस स्टोरी में बहुत गलती होगी, तो प्लीज शूट करना जो भी। हाँ, तो इसमें मैंने बहुत जल्दी बातें निकाली। मैंने बताया सॉरी मैंने बताया इसमें लिखा है कि जो हुमिली है उसे एनेस्थीसिया दिया है क्योंकि वो ब्लीडिंग कर रहा था।
क्योंकि ऑब्वियसली उसके मम्मी और डॉक्टर को तो पता ही नहीं है ना कि वो हैरी के साथ दोस्त है, और हैरी मतलब एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर जैसा क्रीचर है, तो किसी को पता नहीं हो कि वो हैरी के साथ दोस्त है और ये सब। तो लोगों डॉक्टर को लगा कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उनने कुछ इंटरनल मतलब उसका ऑपरेशन करके उसकी ब्लीडिंग रोक दी, थोड़ी सी बाकी थी, और बोला कि एक और बार वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक और सर्जरी करेंगे। और ये बात कर रहे थे, तो अब 1 महीना हुमिली का ट्रीटमेंट था, क्योंकि वो राइट साइड से पैरालाइज हो गया था। और भाई अभी इस सेकंड मैंने रियलाइज किया कि सेकंड बुक है, उससे मैंने कैसा कोइंसिडेंटली कनेक्ट। वो स्पॉइलर हो जाएगा सेकंड का, मैं थोड़ा बता दूंगा तो नहीं, पर मतलब कोइंसिडेंटली मैंने कनेक्ट किया है। तो ये याद रखना कि यू आर पैरालाइज्ड फ्रॉम योर राइट साइड, ये थर्ड वीडियो है, और थर्ड वीडियो फोर्थ चैप्टर, अगर कोई याद रख पाए तो। A month was too much. I wish that I can hibernate this long. At night I saw Harry again. मैंने बोला है चीजें बहुत फाट फाट जाएगी, तो कैचअप करने में थोड़ा सा हार्ड है। At night I saw Harry again. I was ready. I made a plan to steal his sword. He would call a monster to grab my mouth. So I would go behind Harry and the monster would grab Harry's mouth. And I'd grab his sword. I again threw some dead bodies near me and pointing towards me. I heard the same squealing noise again. I held Harry's waist and dragged him near my face. A shadow covered his face, and then I grabbed the sword. I was ready for the fight. I then stabbed the sword in Harry's belly. He was moving his leg. I moved the sword in and out a few times. After 5 minutes of doing this, Harry stopped moving. Wait, wasn't I paralyzed? I was able to walk. I remembered my science class. Right part of brain affects your left memory. The memory in the left. Well, just in simple language, I can walk. Harry stopped moving. I thought to kill the monster and check Harry. Harry, the cut was too big. Even I was able to see his stomach. I killed the monster and Harry fell down. Harry's eyes were closed. Everything was alright. वो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क में है. A small lighter fell down his pocket. As I picked it, a bat came flying towards me and sat on my neck, grunting. I lit the lighter. The bat got furious and turned into a vampire. He bit me on the neck and I fainted. I was not able to examine the bat, but I can tell that his eyes were way too big and he was black. I was able to feel his nails. They were too sharp. As it turned into a vampire, it was on my shoulder, so I was not able to see him. I'll not tell my 1 month in the hospital because nothing was interesting. I can tell you my timetable. So wake up, 7, brushing, bathing, till 7:45, treatment, 8 to 9, playing, time pass, 9 to 1:30, lunch, 1:30 to 2:30, big treatment, 2:30 to 5:30, evening snacks, 5:35 to 6:05, small treatment, 6:30 to 7, dinner, 7:30 to 8:15, and sleep, 9. ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ हुआ है, बट ये जो ट्रीटमेंट है इसे थोड़ा सा कट कर दो. हमें पता चला कि हुमिल ने हैरी को वापस देखा अपने सपने में, पर इस बार हैरी को फाइट किया
और हैरी को फाइट किया तो उसकी जेब में से एक लाइटर गिरा। वो लाइटर को हुमिली ने जैसे पिकअप किया, एक बैट, एक चमगादड़ उसके कंधे पे आके बैठ गया। किसके? हुमिली। और जैसे हुमिली ने लाइटर को जलाया, वो बैट गुस्सा हो गया और वेम्पायर में बदल गया और उसने हुमिली के नेक पे काटा, से हुमिली बेहोश हो गया। तो अब जिस हिसाब से हुमिली ने वो एक्सप्लेन किया है कि वो बैट बैट एक्चुअली था कैसा, उसके आईज वर वे टू बिग, बहुत ज्यादा बड़ा था, उसकी आंखें बड़ी थी और उसकी आंखें बड़ी थी बैट की, और वो बैट काला था। उसके नेल्स बड़े शार्प थे। इतना हुमिनी ने मतलब नोटिस किया उस बैट के बारे। एक सेकंड दो, मैं पानी पीता हूँ, पानी हाथ में। ठीक है, चलो मैं आगे कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दूं। हाँ तो हाँ, after a month, I went to my school. Harry was not there. I called the curse number and no one picked it. After the school day, I saw Harry injured. His stomach got a big cut, and on the top of his eye there was a scar. I asked, who did this? You, he said softly. What do you mean? Yes, he replied, grunting. He stabbed my sword in my stomach and made me activate my vampire bat form. I remembered that day when I fought with him. A black bat also came and turned into a vampire. When Harry, I said in a suspicious way. In my dream, for once I got shocked. He said, leave that. Are you coming to the mansion? Yes. He gave me the time of 4 that evening. I went home. I was quite worried about my health. I don't know, but I felt something dangerous. I went in my room and I got very dizzy. ठीक है, ये एक और सिप मारता हूँ मैं। और दिस पैराग्राफ थिंगी, पैराग्राफ नहीं है, this paragraph is actually linking कि एक्चुअली जो होमिली के साथ वो सपना था ये सच था। मैं भूल गया, शायद सपना था या सच था, कुछ तो था। तो जो वो होमिली ने एक्चुअली किया वो हरिके के साथ हो गया उसके सपने में, और फिर वो रियल लाइफ में हैरी को अफेक्ट। मतलब या तो ये हो सकता है कि एक्चुअली हैरी एक वैम्पायर बैट का एक फॉर्म है, वो वैम्पायर बैट बन सकता है, बैट से वैम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कुछ है। I don't want to go to the hospital again. अब this thing might be interesting, और नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इसी वीडियो में कर रहा हूँ तो कंटिन्यूशन रहे। तो ये पैराग्राफ में जो हुमिनी मतलब उसके घर के इसके लिए कुछ बुरा सेंस करता है और वो अनडीजी फील करता है। I don't want to go to the hospital again. My nose felt to burst out. I was like hot blood turning blue and cold. Sorry. I am not able to breathe. I just got sweat coming out. When I saw my face in the mirror, I got shocked. So not good. That's why I wasn't feeling good of my health. How this happened? I don't feel good. Do I not felt good? No, I don't feel good. I just wanted to go back normal. What will my mom think?
and my dad, my brother. I was very sad. My brother came into my room and asked, Bro, can I have £7? कि मैं रहता हूँ अगेन और यूके में पाउंड चलता है वहाँ की करेंसी यूज करे. I was shocked now. Bro, you are too young for carrying this much amount. I said hilariously. Actually, mom gave me £10 and to give me asked to give me 7 more. Oh, I, oh, sorry, I don't have money. I was having a £10 note in my pocket. I don't want to turn back with this horrible face. Okay, Lion, I know that you have £10 note in your pocket. He turned me and screamed. I quieted him and said, Please don't tell this to anyone. I'm confused too. Please. How? This thing was impossible. I just turned monstrous. तो ये फोर्थ चैप्टर के एंडिंग का हमें ये पता रहता है कि नेक्स्ट चैप्टर है एक प्रेजेंट ये मतलब कनेक्ट होने वाला. तो अब कनेक्शन में भला होमिली को ऐसा क्या हुआ उसके भाई ने ऐसा क्या देखा उसने मिरर में अपने चेहरे में क्या देखा वो इतना चिंतित क्यों हो गया ये अभी इसी वीडियो में पता चलेगा. लेट्स गो. How you turned in a vampire? He said softly. I don't know. Wait, yes. My friend can cure it. Who? अच्छा रुको. ठीक है, first line. How you turned in a vampire. तो होमिली वैम्पायर बन चुका था और वही मतलब वैम्पायर मतलब वैम्पायर फील कर पाते कि एक्चुअली मतलब आपको क्या लग रहा है. और वैम्पायर दिखने में भी अलग होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत और वो सब. तो अब होमले ने देखा कि वो भाई वैम्पायर में बदल गया, अपने वैम्पायर में बदल गया. ठीक है, उसके भाई ने पूछा कि तुम वैम्पायर कैसे बने. अब कंटिन्यू करते हैं. I don't know. Wait. Yes, my friend can cure it. Who? He. I don't want to take his name. He is a telepathic monster. He is an astrologer. Astrologer? Yeah. Don't waste my time. You open till 4:30. I knew that I lied to him, but as my uncle died, I don't wanted him to die. I felt like my brother is going to follow me secretly. I slapped him and said, Don't you dare follow me. He started to cry and went away. I said to Mom, I am going out. My mom said okay and I went. I reached there and saw Harry working on the machine. I said him, Harry, look, I turned into a vampire. Sure. Yes, it worked. Oh, there's one problem. He screamed. What problem? Okay, I'll explain. Actually, I needed a vampire army who can feel the future. So I made an antidote for it. The problem is that it is a permanent effect. Harry, I cried. Please cure it. Wait, don't cry. Do you want to hear the characteristics of a vampire and then decide to turn back to normal? I was furious at that moment. Go on, Harry. He started in a normal voice. So, vampires have very long canines to tear the flesh and suck the blood. Their teeth are visible. Vampires can't be electrocuted. They are shock resistant. Vampires can turn into a bat and have a pen. They have a
They have a very concentrated mind. They can talk to their pets. Vampires have a scar on the top of their head, just filled with blood. It is easy to recognize them. Main point: vampires can feel the effect happened in the future. Like a planet takes birth, so the vampires can only feel the planet, not how it was from. Can vampires fly? I was very excited after knowing about a vampire. Yes, they can. Vampires need 39,100 miles of height to die from what? I was very fascinated about knowing a vampire, thinking that it can fly. I'll have a pet I can turn into a bat and much more. Turn me in a vampire, I said excitedly. Turn me. Well, wait, you're a vampire. But vampires are blue, so they are easily noticeable. And what about your family? Yeah. Uh, so I'll I was quite confused about my family. My brother, my mom, my dad. What will they what will they do if I left? Search for me, consider me dead, and what if my brother tells mom that I turned into a vampire and went to an astrologer and never came back? I was very sad. Then Harry said, "Go tell your mom that you turned into a vampire and don't let her know about me. If she gets more panic, I'll give you an antidote to cure." हाँ, अभी मैंने लिखा था कि ये वैम्पायर परमानेंट इफेक्ट है, पर ठीक है, एडजस्ट करो यार गाइस थोड़ा. You are a vampire, so you only drink blood to full your stomach. Don't sleep with someone, otherwise you'll bite them. Harry, give me that antidote now. I don't want to tell her. Please, I groaned. Harry gave me the antidote and cured me. I went home. The whole way I was thinking that shall I leave my family or be normal? I bumped into a pole. As I bumped, I felt it cold and sticky. There were gums all over. So I ran towards my home. At my home, my big brother saw me and stared and started to dance. Hey, you're killed. He took me to mom. He said, Mom, brother, I beat him and sucked his blood. He fell down. ना अभी ये थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा समझ समझने पे जाना. My mom looked back and screamed. Then she saw me. He screamed more loudly. He ran out of the house with my brother. I was alone at home. I got stunned at how I beat my brother. I went to my room and saw that I was a Dracula. Dracula. I got stunned. I called Harry's curse number and told him everything. He laughed and disconnected the call. I was crying. I was an evil. I bit my brother. What if he died? Went in a coma. I went to the nearest hospital. I wore a cloak. The cloak was dark blue and purple. I went to the hospitals. I secretly went into the emergency ward. I looked around at the end. I saw my brother. He was conscious. I went near him. He saw me and started to scream, "You bloody monster, get away." I bit him again on his neck. He turned white. I don't wanted to bite him. I think he died. Maybe I sucked his 5 liters of blood. I started to cry. I lost my brother. I turned back. I saw Harry. He was cheering and smiling evilly. I saw my brother. His eyes were not opening. I was shaking continuously. Harry was still smiling. He then stepped forward, slowly coming towards me.
He reached near me and said, "Ha, you killed your brother." Or "Ah." I turned towards him. I looked at him furiously. I turned to him to bite his neck, but he jumped away. Aha! This, this this क्या बोलूं, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसमें जो मतलब था तो अजीब ही लॉजिक, पर वे मैंने कंपोज किया है, आई लाइक दैट। तो इसमें क्या हुआ है कि हमें शुरू में ही पता चल गया, मैंने अभी बोला कि जो होमिली वो एक वैम्पायर में बदल गया। He turned in a vampire. He turned in a vampire. और वैम्पायर में बदल गया। फिर होमिली को याद आया कि हाँ, हैरी है मेरे पास, हैरी को तो वैम्पायर की नॉलेज होगी, वो मुझे क्योर कर सकता है। वो हैरी के पास गया। हैरी ने बोला कि वैम्पायर इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट कांट बी डिलीटेड। मतलब वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम जादू तोड़े से भी हटा नहीं सकते, तुम वैम्पायर हो। फिर मुझे लगा कि एंटीडोट का डालना चाहिए। तो वो ने बोला ठीक है भाई, दे दे, कि मैं अपनी मम्मी को नहीं बचा रहा, मैं वैम्पायर बना और ये सब, और तो मुझे नहीं बचाना। तो हैरी ने एंटीडोट दिया। अब घर गया होमिली, उसके भाई ने बोला कि वो वापस नॉर्मल हो गया और उसको अपनी मम्मी के पास ले गया। और जैसे उसका भाई उसकी मम्मी को बताने लगा कि एक्चुअली होमिली एक वैम्पायर बना था, तो होमिली ने उसे काट लिया। और फिर वो उसका भाई गिर गया और उसकी मम्मी उसे लेके भाग गई हॉस्पिटल, और दादा वो सब। तो अब होमिली ने उसे काटा कैसे, क्योंकि वो ड्रैकुला बन गया था। तो देखो, एक मतलब मेरा ब्रेन ये सोचता है ना, वैम्पायर्स और ड्रैकुलास में जो अंतर है कि ड्रैकुलास आर, मैं ऐसा समझता हूँ कि ड्रैकुलास आर एंसेस्टर्स ऑफ वैम्पायर, वो वैम्पायर्स के पूर्वज हैं। और ये भी सोचता हूँ कि ड्रैकुलास आर नॉट दैट, मतलब स्पॉटेबल नहीं है इतना ज्यादा जितने स्पॉटेबल वो है वैम्पायर। ऐसा मैं सोचता हूँ, आप क्या सोचते कमेंट में बताना, और वो सब ठीक है। तो अब मिली गया उसकी वो बात के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। उसके वहाँ रूम में उसके भाई एक बोलता है कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम एक मॉन्स्टर हो। और वो उसके भाई को काटता है, शायद मार भी देता है। स्पॉइलर अलर्ट, वो नहीं मारता, उसे लगता है वो उसका भाई मर गया। तो वो अब देखता है कि वहां पे हैरी खड़ा है, तालियां मार रहा है, चीयर कर रहा है और स्माइल कर रहा है। वो इविल वाली स्माइल आ रही है उसके चेहरे पे, हैरी के चेहरे पे। और हैरी ने उसे क्या बोला, हाँ तुमने अपने भाई को मार दिया, या मैंने या मैंने यू किल्ड योर ब्रदर, और आई, क्या तुमने मारा है या मैंने मारा। मतलब हो सकता है हैरी ने, इट्स लाइक छलावा हो सकता है कि हैरी हैरी चाहता था उसके भाई को मार। तो he revealed his fault. I was a Dracula, so I was unable to fly. One more key difference of a Dracula, I think they can't fly. He threw his sword on my brother. I got angry and my eyes turned bright yellow. I jumped on him and beat him. I also sucked his blood. He fell on the ground.
I turned to the main door and stepped to go out. It was terrible. My mom and some police came in my room. My mom saw my brother. He fell on her knees and started to cry. When I turned back to see, I saw that Harry's sword was stuck on my brother's chest in at 40 at 45-degree angle. Homily. Oh, homily. I did not expect this from you. Why? My mom asked me. Mom, that's a near monster. Now die, officer, catch him. I, I was having no way to get out. Will I die? Am I Dracula? Have I really killed my brother's father? नहीं मारा है उसने अपने भाई को नहीं मारा है. Am I caught? What will I do now? अभी चैप्टर 6 कितना बड़ा? हाँ चैप्टर 6 मैं बोलता हूँ अच्छा चैप्टर है और खत्म खत्म कर. तो अब लास्ट बिट पे ध्यान दो क्योंकि कंटिन्यूटी होती है. लास्ट बिट में जो जो वो क्या बोलते हैं कुंडली बाहर निकलने वाला था उसने हैरी को मतलब बेहोश कर दिया. हैरी मर नहीं सकता, हैरी मॉन्स्टर है. तो अब वो जब डोर से बाहर निकलने जा रहा था मम और कुछ पुलिस वाले रूम में आ गए और फिर अब हैरी की स्वॉर्ड वहीं थी और ऐसा लग रहा था कि होमिली ने उसके भाई को मारने की कोशिश की है और ज्यादा. तो और क्योंकि उसका भाई का बहुत सारे खून निकल गया उसकी मम्मी की यही इमेजिनेशन थी ये होमिली ने उसे पूरा खत्म ही कर दिया, मारने की कोशिश की है. तो अब ऑफिसर्स उसे उसकी मम्मी ऑफिसर्स को पकड़ने का ऑर्डर देती. अब वो क्या होगा, या तो क्या वो मरेगा, क्या वो ड्रैकुला है, क्या उसने अपने भाई को मार दिया. स्पॉइलर नहीं मारा. एम आई कॉट स्पॉइलर नहीं. What will I do? Chapter 6 is the spoil. So let's go. Chapter 6 फटाफट खत्म करते हैं. मैंने बोला 7, 8, 9 और 10. 7 और 8 और 9 और 10. हाँ ये हैं लंबे लंबे चैप्टर्स फिर छोटे छोटे चैप्टर्स. ये खत्म कर. The police was coming towards me. The police was coming towards me. I jumped on an officer and bit him. He fell on the ground. The other police started to shoot me with bullets. I was getting attacked. So I jumped from the window. The room was on 5th floor. I jumped from there with no idea. It seemed like I won something, but it was I lost something. I seriously killed my brother. Spoiler, nahi mara hai. I'm the monster. In some books, I have read that there are 52 vampires and 55 Draculas in the world. It is now 56. When I was falling, I decided to become a vampire, leave the home, and became Harry's vampire. I fell down on the ground. It was very painful. On the ground there were also some pieces of glass. They hurt me on my back. An officer from the top said, he fell down. I repeat, he fell down. We can capture him. Over and out. I was just feeling that. A few minutes later, many officers surrounded me. An officer said, hi Dracula number 56. We trapped you. We will pick and kill you. A sword came from up to down, ripping the officer's chest. Sword made everyone collapse on the ground. मैं स्टार्टिंग में क्यों भूल जाता हूँ. बट गाइस अगर आपको वायलेंस में दिक्कत है, leave a like and stop. Leave a like, subscribe and stop reading this book.
इट इज फुल ऑफ वायलेंस। तो इसमें क्या हुआ कि हुमिली ड्रैकुला था, तो और वो उड़ तो सकता नहीं था, तो उसने सोचा मैं मतलब ग्लास तोड़ के निकल जाता हूँ, मतलब कूद जाता हूँ छत से। मैं मान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ी चोट आएगी, कि दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट ड्रैकुला। ड्रैकुला और वैम्पायर ऑलमोस्ट सेम स्पीशीज है। मैंने बोला वैम्पायर्स को मतलब 39,000 माइल्स का ड्रॉप लगता है मरने के लिए, तो ड्रैकुला को अगर 40,000 माइल्स भी लगे, 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर के वो मरेगा तो नहीं। तो हुमनी मरा तो बिल्कुल नहीं, ये सोच के वो कूदा। तो अब ऑफिसर्स आए उसे गिरने, क्योंकि उसे ऐसा लगा वो पकड़ लेंगे उसे। तो अब एक स्वॉर्ड आई और एक ऑफिसर के चेस्ट को फाड़ के स्वॉर्ड उसके हाथ में। स्वॉर्ड केम फ्लाइंग टुवर्ड्स मी, हाँ उसकी तरफ आई। इट वाज ग्लोइंग, द स्वॉर्ड टिप got upside down, like someone wanted to grant me this sword. I hold it from the hand. Who will grant me the sword? Harry, this was his sword. As I hold it, I healed. I got energetic and got the power of 100 new. How? Now I could destroy everyone. It was the dark night. There were 5 street lights and 3 were flickering toward. Pinindo. Three were flickering, 2 were off. It seemed like a fascinating battle. I stepped to the police officers and wrote, and faster. They were attacking me with their guns. I was not damaged. I chopped an officer's head, but then an officer struck me with a bat very hard. It might not hurt me, but the bat was having a cross. Now, this is also, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वैम्पायर्स और ड्रैकुला दोनों का मेरा इमेजिनेशन है कि जो क्रॉस होता है वो दोनों को बहुत मोटा हार्म पहुंचा सकता है, मतलब वीकन कर सकता है उन्हें। उनसे बचने के लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, अगर तुम्हारे पास फायर वगैरह कुछ नहीं है तो a cross. You can use a cross. I don't know where I was taken. मतलब होमिली बेहोश हो गया है। ऑफिसर ने उसे बैट से बहुत जोर से मारा जिसपे क्रॉस था, तो अब होमिली को पता नहीं उसे कहाँ लेके आए थे। After some time I woke up. An officer was sitting next to me. When I saw around me, there were so many officers. I made a plan. They would have the sword, so I will distract them and take the sword. I can get out from the door because there was a cross on the door. I can't get out cross on the door. Only there was one way, the roof. I get up. I started to bite everyone. I started to search my sword. It was absurd. The room in the van had weapons. I turned back and saw the driver. The driver was panicked. I went to him and jumped on him. It turned the steering towards the cliff. I bit him. My teeth went too deep in his neck. I sucked his complete blood. The policeman van fell down the cliff. Am I dead? My eyes popped open. I kicked the van and got up. Am I alive? There were many new reporters around the van. Many news reporters around the van. I climbed up the cliff and ran in the east. I ran and ran and ran to the sunrise. Oh no, I will burn.
मैं और बोल I gave my body to the sun. I was continually running. I bumped in a person. He was wearing a shawl. As I bumped into him, I felt like my toenail is going to crack. I felt like the sun is a theory, means the sun isn't real. I got covered by his shawl, and I fell on the ground. He said, "Oh, sorry." He was not knowing that who was I. I got angry and turned red. I grabbed his hand and said in a deep voice, "I should say sorry." I made him lie down. I kept my leg on top of his chest. I groaned. His brown eyes were still on me. He started shouting. I hushed him and said, "I am Dracula. You are on the mountain, and police will take long time to find you. Well, let me fill my waving belly. Shall beep, beep." It was the police. I dragged the man on the feet. I got annoyed after some time. As I got frustrated, I threw him down the cliff and I continued running. I covered the shawl on top of my head. Actually, I was going towards Ken Mansion. I reached in the city. There on the wall, I saw news. ठीक है, न्यूज पढ़ता हूँ. हाँ, तो मेरे को एक वैन में रखा था और वैन के की होमिली आ गया था, तो वो वैन के के ऑफिसर को काट रहा था और ये सब. तो जो ड्राइवर ऑफिसर था उसे होमिली काटने जाते हैं, पर ड्राइवर ऑफिसर वाज स्मार्ट. ही टर्न द वैन डाउन द क्लिफ. से वो तो मर ही जाए, पर होमिली भी उसे लगा होमिली भी मरेगा, पर होमिली ड्रैकुला है और ड्रैकुला हाइट से मर नहीं सकते. होमिली मतलब उस मतलब ऐसा कोई भारी एक्सप्लोजन नहीं हुआ जिससे होमिली एक्चुअली मर जाए. तो होमिली एक क्लिफ क्लाइंब करके कहाँ भागने लगा, केल मैंशन की तरफ भागने लगा. तो उसने क्या किया, एक आदमी मिला उसे जिसकी शॉल होमिली को मिल गए सही टाइम पे, क्योंकि सनराइज हो रहा था. और दिस इज ऑल्सो व्हाट आई थिंक अबाउट ड्रैकुला एंड वैम्पायर. सनराइज में वो लोग जल जाएंगे. गार्लिक वाली बात मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की. गार्लिक एक्चुअली एक अच्छा पॉइंट हो सकता है. वो मैंने वो नहीं सोचा था. मैंने वो सन में जल जाएंगे. तो ओमिली वो शॉल में कवर्ड हो गया, वो आदमी जो माउंटेन पे था. तो उसने बोला सॉरी, पर होमिली को आया गुस्सा और उसने उसका हाथ लिया और बोला कि क्यों उस बंदे को सॉरी बोला, क्योंकि वो उसे खाने वाला था. कि उससे लग रही थी भूख होमिली को, डेफिनेटली वो ड्रैकुला है, वो मारेगा, क्योंकि उस बंदे ने एक्चुअली होमिली को देख लिया था, तो वहीं से जिंदा थोड़ी छोड़ेगा. हाँ, तो होमिली उसे वार्न करता है कि तुम माउंटेन पे हो और पुलिस को लॉन्ग टाइम लगेगा तुम्हें ढूंढने के लिए. तो उससे पहले ही मैं अपना पेट भर लूं. पर तभी पुलिस आ जाती है. तो होमिली क्या करता है, उस मैन को घसीटते हुए ले जाता है और कुछ टाइम बाद वो अनामी होता है. और तब वो क्या करता है, उस बंदे को वो जो क्लिफ है, पहाड़ क्लिफ है, उसके नीचे फेंक देता. मतलब सीधा फेंक देता है, नो मर्सी. फेंक देता है, नो मर्सी. होमिली कोई मर्सी नहीं दिखा है, फेंक देता है. आई कंटिन्यूड रनिंग. और होमिली कहाँ जा रहा था, केल मैंशन. उससे एक न्यूज दिखती है दीवारों पे, सिटी के. वो न्यूज क्या होती है, a new created Dracula has ran from us.
He is very dangerous. He can bite anyone at any time. So be careful. His eyes are blue and he was very skinny. He was a slight of red and slight of grey. His his hair, uh, his eyes, his hair are very dry and now he is wearing a short. The one or the family who catches him will get 10 million pounds. If any report, please contact us. His shawl is plain and purple. Hmm. So, the thing I want to discuss about Dracula and ये पढ़ के मैं ड्रैकुलस और वैम्पायर्स का मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। जो ड्रैकुलस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं वो ऐसे मेंशन कर रखे हैं कि ड्रैकुला ऐसे है कि कहीं भी किसी को बाइट कर सकते। वो ड्रैकुला तो ऐसा वैम्पायर्स नहीं कर सकते। ऐसा व्हाट मतलब obviously vampires and Draculas are not real, but that's what ऐसी स्टोरी आपको बनाने के लिए आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट जागना चाहिए, आपको दिमाग में आइडियाज जागने चाहिए. I need to be more alert in the city now. I need to cover myself with something else like that guy. Definitely not. No, it is suspicious to carry a body like. I saw a guy with a black hoodie. I can cover myself with it. I first decided to talk peacefully. I said, "Hey man, can I borrow your hoodie?" Hoodie? What level of idiot are you exactly? Idiot? I hold his neck and squeezed it hard and hard. My teeth were scratching each other. I was knowing not to bite him, but my starvation for his blood was attracting me. I slammed him on the ground and jumped on him. Said in a negative voice, "I'm in Dracula, and if you beep beep," the police van came again. I beat him on his neck and took the hood. I ran and ran. The van was chasing me and I was running. Oh, let's say chapter 7. हम यहीं पे रोकते हैं. चैप्टर 7 है, फिर 8 है. ओके 8 फिर 9 का छोटा सा चैप्टर है और 10. यस 10 is a fine and 11 is also fine. नॉट ठीक है. तो अभी जो ये हुआ है सोफार, जो सोफार हमने पढ़ा है कि जो हुआ मतलब जो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी. ऑब्वियसली होमिली एक ड्रैकुला बन गया और ड्रैकुला मतलब जिस लेवल की मैंने सोच लगाई है यहाँ पे कि ड्रैकुला और वैम्पायर ये तो ऑब्वियसली पुलिस विल नो ये दोनों जान लेने के काबिल है एंड दिस टू आर हार्मफुल, वेरी हार्मफुल. दे आर हार्मफुल, लोगों को मार सकते हैं. तो होमिनी क्या करता है जब उसे न्यूज दिखती है तो वो एक मतलब बस अपनी बॉडी को छुपाने के लिए एक आदमी से हुडी बोरो करने के लिए पूछता है. फिर आदमी उससे बोलता है कि बेवकूफ होगा तो हुडी के लिए मांगेगा. तो होमिनी को गुस्सा आ गया और हाँ उसे मतलब मारने ही वाला था. ये पुलिस की गाड़ी वापस आ गई उसे चेस करने लगी पर उमिले ने उस आदमी की
नेक पे काट लिया, हुडी ले ली और भाग गया और भागा। रानी उसे चेज करती जा रही थी, करती जा रही थी। चैप्टर 7 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ओके गाइस, नाउ 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 नाउ, हाँ ठीक है। तो अभी मैं देखो एक छोटा सा मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे। देखो ये जो ड्रैकुला, वैम्पायर, भूत प्रेत और ये मॉन्स्टर आप बिलीव करते हो तो आपकी बात अलग है। मतलब मोस्ट पीपल डोंट बिलीव इन दिस थिंग। ऐसे मतलब कोई भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देख लो, मतलब लोग बिलीव ही नहीं करते। जो लोग बिलीव करते हैं, मतलब कुछ लोग बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान है तो भूत भी है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। दिस और इज जस्ट माई इमेजिनेशन। ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंस नहीं है, ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंस नहीं है। कुछ इंस्पिरेशन शायद होगी एक तो, कोई सी बुक मैंने अगर पढ़ी तो। कोई इंस्पिरेशन नहीं है, दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन। तो इसमें जो अगर आपको भी ऐसी कोई बुक लिखनी है, यू डोंट हैव टू लाइक ठीक है जस्ट स्ट्रेट ऑन स्टार्ट राइटिंग लाइक ठीक है मॉन्स्टर की बुक नहीं, मॉन्स्टर के बारे में एक चैप्टर लिख लो, फिर उसे कंटिन्यू करते करते खत्म कर दो बुक को। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। पहले आप प्लान बनाओ कि आपने अगर एक चैप्टर को भी अच्छे से थ्रू आउट प्लान कर लिया तो आप बाकी चैप्टर भी इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब आपकी इमेजिनेशन से बनाना है। यहाँ पे मैंने वैम्पायर और ड्रैकुला को अलग क्यों किया? दोनों ही खून चूसते हैं, दोनों ही मॉन्स्टर के रूप में, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट क्यों किया? डिफ्रेंशिएट इसलिए क्या है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। वैम्पायर अपनी जगह था, वैम्पायर के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे वो उड़ सकता है, वो बैट में बन सकता है। ड्रैकुला के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बैट नहीं बन सकता, वो उड़ नहीं सकता, वो वैम्पायर का बहुत ऐसा वो क्या बोलते हैं एंसेस्टर है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो दोनों डिफरेंट है, यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड सम सिमिलैरिटी। ऐसे मैंने इंक्लूड किया सिमिलैरिटी कि ड्रैकुला वैम्पायर, ड्रैकुला और वैम्पायर दोनों सन में मिलते हैं और दोनों ही एक टाइप मतलब एक ही फैमिली पार्ट है। और ड्रैकुलास का वन मोर कि ड्रैकुला जो मैं बिलीव करता हूँ ड्रैकुलास के बारे में वो है कि ड्रैकुलास आर अनडेड क्रिएचर। मतलब जो वैम्पायर थे वो मर सकते हैं, मर सकते हैं एक मतलब मर सकते हैं। ड्रैकुलास आर ऑलरेडी डेड, वो मर चुके हैं, ऑलरेडी मर चुके हैं, उनका बस शरीर बाकी है और मतलब वो मर चुके हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। Draculas are dead. You can't kill a dead person. You can't die if you are already dead. अब सबसे कूदने की कोशिश करो, पर आप एक आत्मा हो तो आप छत से कूद पाओगे? चलो कूद तो पाओगे, आप मारोगे नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डेड। आपकी बॉडी का अंधकार आपकी बॉडी का ऑलरेडी गड़ चुके हैं, तो यू कैन लाइक डाई अगेन, यू कैन लाइक ड्रैकुलस का मैं ये सोचता हूँ कि ड्रैकुलस कैन डाई, कैन डाई, पर उसका मतलब होगा कि अब वापस ड्रैकुला बन के रिटर्न नहीं कर सकते। they were a human before, a human died and turned into Dracula. Dracula died
and then it is the end. No afterlife, nothing. पता नहीं क्यों क्यों दे रहा हूँ ये भाषण, पर बस इस भाषण लेक्चर जो भी है, पर ये मैं बोल रहा हूँ आपको अगर बुक लिखनी है तो क्रिएटिविटी है, आपको कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप करना है अपने माइंड. ठीक है, आई शुड स्टॉप इट. इट इज अलाउ मीडिया ऑलमोस्ट एन आवर. तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्रिडिक्ट करना कि आगे बुक में क्या होगा, और फर्स्ट वीडियो देखना पूरी ब्लड को जानने के लिए. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.